नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर उषा नायर एंड आई एम हियर ऑल द वे फ्रॉम मुंबई। इतनी खुशी होती है कि एक बेहतरीन से सैटरडे की शाम को 8 बजे जब हमारे पास एक बढ़िया सा चॉइस होता है, चलो फैमिली के साथ बाहर जाते हैं, चलो कहीं डिनर करते हैं। बॉम्बे में और कई जगहों पे इतनी मस्त बारिश हो रही है, चलो कहीं बारिश में घूमने चलते हैं। और फिर भी हम सभी बढ़िया लोग यहाँ पर आज हैं। उसके लिए आप सभी लोगों का मेनी मेनी हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस। वेल फ्रेंड्स, आज का दिन एक सुपर सैटरडे हम इसलिए भी कहेंगे क्योंकि आज का दिन एक बहुत बड़ा लैंडमार्क दिन है। प्लीज वेट इस इवेंट के अंत तक, ताकि एक बहुत ही बढ़िया सा सरप्राइज है आप सभी लोगों के लिए। और आज 3 बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, मैं बड़े इसलिए कहती हूँ क्योंकि आप और मैं जो यहाँ पर हैं वो इसी एक कारण से हैं कि हम अपनी लाइफ में एक बदलाव लाना चाहते हैं। कितने लोग यस, जल्दी जल्दी हाथ ऊपर या फिर यस यस टाइप कीजिए। और उसके साथ साथ हम अपने किसी करीबी के या अपने जान पहचान के या ऐसे भी लोग हैं जिन्हें हम जानते नहीं है बट कभी ना कभी अपनी जर्नी में मिलेंगे, ऐसे लोगों की लाइफ में हम बदलाव लाना चाहते हैं। छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से और वो बहुत ही बढ़िया एक कदम है अपनी कामयाबी की ओर। और अपने परिवार, रिलेटिव, सोसाइटी, अपने छोटे छोटे कदमों के थ्रू take those baby steps and you will reach success and you will take people together with you for success। कितने लोग समझते हैं कि हाँ, हम यहाँ आज इसलिए हैं क्योंकि हमें सक्सेस चाहिए। और वो ये प्लेटफॉर्म, ये बढ़िया से 3 ऑर्गेनाइजेशंस का प्लेटफॉर्म जो आज रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है आज की शाम बेहतरीन बनाने के लिए। तो हम बड़े ही बढ़िया तरीके से, हमारा वेलोसिटी जेनेटिक्स का एक वेलकम होता है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगी, गेट एक्साइटेड, स्विच ऑन योर वीडियोस एंड आई वांट यू टू वेव ईच वन ऑफ अस अ वेरी वेरी वार्म वेलकम। मेरे हाथ दिखाई दे रहे हैं? हाय, so good to see all of you here. We are almost 200 people here today and what a pleasant day। तो हम यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने बता दिया, दूसरा है एसएचपीएल। हम सभी जानते हैं एसएचपीएल को। वेल, वेलोसिटी जेनेटिक्स से मेरा संबंध है ऑलमोस्ट 5 साल से एंड एसएचपीएल से मैं कहूंगी मेरा संबंध अभी अभी रिसेंटली जुड़ा है, बट आई एम अ प्रोडक्ट लवर, आई एम अ प्रोडक्ट यूजर। एसएचपीएल एक इंडिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग हेल्थ एंड वेलनेस कंपनी है जो not only health and wellness products में deal करती है, but it is broadly into consumer durables. It is a consumer durables company and it is based in Calcutta and now headquartered in Delhi. So are we all excited again? So let's give another small wave. Quickly, quickly. This is for all our friends and family of SHPL. Yes, and सबसे बड़ी बात, हम इस बहाने से यहाँ आए हैं कि हमें एक नहीं कई सेलिब्रेशंस करने हैं। कई ऐसी लोगों की जिंदगियां बदल रही है जो काम के साथ साथ कुछ अपनी लाइफ में नॉलेज, इंफॉर्मेशन और नेक्स्ट लेवल का ज्ञान लेकर अपनी लाइफ आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक नई दिशा में करियर लेना चाहते हैं। एंड इसलिए there is our wonderful Velocity Institute of Genomics, Nutrition and Entrepreneurship Training. So ये तीसरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए you can either wave or you can clap. Yes, so हम 3 बढ़िया से ऑर्गेनाइजेशंस के वेरी ब्यूटीफुल पीपल, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। जैसा मैंने कहा, मैं वेलोसिटी जेनेटिक्स से 5 साल से जुड़ी हुई हूँ, बट विग्नेट, दी वेलोसिटी इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स, न्यूट्रिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग, मैं तो ये कहूंगी उसकी शुरुआत से जुड़ी हुई हूँ। मैंने ये कम से कम जो प्रोग्राम आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मुख्यतः दैट इज दी convocation ceremony of the 8th batch of students who have done their certificate course in the science of nutrigenomics। 8 ऐसे बैचेस हैं और मुझे ये बहुत अच्छे से याद है कि ये बैचेस 2 मंथ्स ऑनलाइन प्रोग्राम होने से पहले हम
3 दिन जाके we used to have a wonderful holiday, we used to have wonderful food, and we used to have full day wonderful training 8 hours. That is also what we have done. So इसीलिए मैं बड़े गर्व से कहती हूँ कि I have been associated with Vignet even before it started. So that is the fun, that is the excitement. So are we all excited? Yes. बहुत सारे बदलाव मैंने अपनी लाइफ में लाए हैं, लोगों की लाइफ में लाए हैं, स्टार्टिंग विथ माई सेल्फ, स्टार्टिंग विथ माई फैमिली, एंड यस इट इज नाउ स्प्रेड टू माई बिजनेस एसोसिएट्स, माई फ्रेंड्स, माई रिलेटिव्स, माई कलीग्स, माई जूनियर्स, माई सीनियर्स, as big people as late Ganesha Bejan Daruwala, or it can be the vice president of NSC. These are the people जिनके लाइफ में हम बदलाव ला सकते हैं. पहचान कहां से हुई? बस हो जाती है. Talk about what you do, talk about the products that you love, and talk about being healthy. हम इसको कहते हैं holistic health. So today let us celebrate, friends. Sales भूल जाओ, products भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ. Let us just be happy. क्योंकि वो जो हैप्पी हार्मोन अपने दिमाग में सिक्रीट होता है, उससे अपना पूरा लाइफ चेंज होता है. How many of you agree? Good. So let's begin. I will say let's get started now officially with the program. Yes, मेरी एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको क्विकली सुनाऊंगी 1 मिनट में, because it is how I started making difference to others. Yes, ये जो जीनोमिक वेलनेस का हम प्रोग्राम देते हैं, उससे कैसे चेंज हो सकता है. I was a diabetic even before I got it to know about this program. क्योंकि मेरी मम्मी को डायबिटीज हुआ एट द एज ऑफ 23, और मुझे भी ये पता चला कि एट द एज ऑफ 23 मुझे भी आई हैव अ वेरी वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि आई एम ऑलरेडी अ डायबिटिक. आज इंडिया में ऐसे बहुत से लोग हैं, ऑलमोस्ट 1 in 4 आर either diabetic or they are going to be diabetic and they are just not aware. But again, मेरी स्टोरी, मैं आज भी थोड़ा सा घबराती हूँ, but yes, I know how to control my health because being a naturopath by background, being into mainstream hospital and healthcare, diagnostics से लेके administration से लेके managing organization से लेके सब कुछ. But एक बड़ा सा बदलाव आया. I didn't know my husband also had a family history of diabetes. उसका शुगर बराबर 1 साल पहले लास्ट में suddenly because of a urine infection we realized he had sugar. You know how much? 299 was fasting, and post lunch was 499, and his glyco HB, for those who understand, यहाँ आज हमारे बैच में बहुत सारे हेल्थ केयर के प्रोफेशनल्स हैं, and it is also happy to and exciting to welcome all of you because you all believed in the science. तो उनका glyco HB was 12.5. No signs, no symptoms, nothing, no fatigue, nothing. And immediately doctor started him on medicines, and एक बहुत जरूरी चीज कही, प्लीज डाइटिशियन के पास जाके अपना डाइट कंट्रोल कर लेना. Well, friends, he is a typical Nair, and he is a non-vegetarian eater. He loves coffee. He was caffeine intolerant. He was lactose intolerant. We stopped his non-veg temporarily. We asked him, he was not gluten intolerant, but we asked him to take the dietitian advice, the nutrigenomic counselor. She advised after looking at his report he must take about 3 days gluten, chapatis, wheat, and char. Then he can take all the other millets, which will be good for him. And friends, any one of you want to see the reports? Within 1 week, we had to repeat his blood test. Glyco HB takes time to come down, all of us know. लेकिन when we did his blood test to see कि उसकी दवाइयां असर कर रही है या नहीं, और डॉक्टर को वो दवाई बदलनी पड़ेगी या इंसुलिन शुरू करना पड़ेगा, वो जानने के लिए बराबर 1 हफ्ते बाद 25th May and 31st May, when we did his blood test, to my shock, okay, to my astonishing results. I am a healthcare professional, I told you, running hospitals for more than 2 decades now, pan India, and his report is 98 fasting and 107 as post lunch. It was wow for me. Okay, ये बदलाव मैंने अपनी लाइफ में भी नहीं लाया आज तक, and in less than a year his glyco HB has come down to 5.3 in precisely 9 months, and now his medications, बोलते हैं ना डायबिटीज जल्दी डिटेक्ट हुआ तो completely reverse हो सकता है. Friends, ये बहुत true है because his medications are 75% gone,
And today he is back on his non-veg, he is back on his drinks, he's a marketing guy. I don't blame him. Okay, some things you can't control in life. So friends, it is not about me, but this was one life changing, very recent, last year ka taza testimonial in my own house. But let us begin today's wonderful day by inviting someone who was the one who started Velocity Genetics, who was the one who had a long foresight. आज वो, even Vignet was his brainchild. बहुत सालों तक उन्होंने उस पर काम किया, कोर्स कैसे बनाना है, क्या करना है, क्यों करना है, क्या इंक्लूड होना चाहिए. एंड फ्रेंड्स, ये जो हमारा कोर्स CCNG होता है, लेट मी टेल यू, ये एक ऐसा इतना यूनिक कोर्स है कि इसका डुप्लीकेटेड मॉडल कोई इंस्टीट्यूट इंडिया में नहीं सिखाते. ओनली वन इंस्टीट्यूट टू विच वी आर अगेन एसोसिएटेड, उनके बच्चे हमारे पास इंटर्नशिप्स के लिए आते हैं और हमारा CCNG कोर्स करते हैं, इज सिम्बायोसिस. एंड सिम्बायोसिस में इट इज अ 2 years फुल टाइम MSc न्यूट्रीजेनोमिक्स कोर्स. So friends, this is like practical training, this is practical coaching, this is combination of genetics and combination of nutrition, and ये दोनों science को uniquely combine करके अपने और अपने जान पहचान वालों की लाइफ कैसे चेंज करने. I just told you one miraculous result right now. So this person is a very multifaceted personality, very strong administrative skills, very good orator, very wonderful trainer. He is been working as a CEO of reputed companies, but he by heart, okay, by passion, जैसे मैं बोलती हूँ, उससे भी कई गुना ज्यादा, he at heart is a man of wellness and holistic health sciences. He actually, because of his intense engagement with promoting wellness healthcare, he has been awarded an honorary doctorate from the OIUCM Colombo, Sri Lanka. And yes, not just that, many accolades to him. And today he is also associated very intensely with SHPL and responsible for not just training, grooming all of you, teaching you what to do, how to be successful, but also has himself as a personally responsible person जो SHPL को बहुत आगे ऊंचाइयों तक ले जाएगा. This SHPL को एक robust business system और network बनाएगा. So friends, please help me welcome none other than Mr. Stan Sarao. Thank you, Dr. Usha. I really like your energy, and मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पूरा वेबिनार हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, आपको पूरा 1 घंटा देना चाहिए इंट्रोडक्शन करने के लिए. That's the level of energy that you have, and you have a lot to say. So thank you very much. So Dr. Usha is our corporate alliance के vice president. पता नहीं, he keeps traveling. One day she's in Canada, the other day she's in Pune, and the other day in Mumbai. So thank you very much, Dr. Usha. You've given a wonderful introduction, and really proud for this day because this is the 8th batch of CCNG. क्योंकि CCNG हमारा काफी एक passionate aspect of our genetic education ecosystem है, because we believe fundamentally that you need to train scientifically on anything if you really want to be successful at a different level. It's one thing to be a jack of all and master of none, but अगर आपको कोई भी एक सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी सी इन डेप्थ नॉलेज करने की चाहत है, so then I think your success rate is going to be very fast. So what we are going to do is we try to close this webinar by around 9:15 latest, and uske beech mein we have a lot of things to accomplish. We have some very eminent personalities with us जो अपने अपने फील्ड में काफी उन्होंने accomplishments किए हैं, कोई ऐसे काम किए हैं जिससे कि वो समाज में आज जाने जाते हैं. तो उनकी भी जेनेटिक्स के बारे में, वेलोसिटी जेनेटिक्स के बारे में और पूरी हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में उनकी क्या राय है हम लोग जानेंगे. So I'd like to share the screen and then give you a little introduction about what we are doing at Vignet. And today we are very fortunate to have SHPL के जितने भी साथी हैं, हमारे मेरे कलीग्स हैं या हमारे टीम मेंबर्स हैं, वो सभी लोग जुड़े हैं. तो आपके लिए भी बहुत हार्दिक स्वागत है. And I'm sure very soon we will have my friend, my colleague, and the CMD of SHPL, Mr. Gopal Kundu, also will be joining us and giving us some message.
So friends, हम लोग once again from Vignet, आप सभी लोगों के लिए तहे दिल से हार्दिक स्वागत है. As Dr. Usha said, Saturday evening, पता नहीं T20 मैच चल रहा है, बर्थडे पार्टी चल रहे हैं, वीकेंड चल रहा है. We could have had different ideas, but I think you have spent here, so thank you very much for logging in. This is late Nelson Mandela, and then he says, education is the most powerful weapon. एंड जो हम लोग अपने मतलब अभी कई बार आपने देखा रहेगा कि इंडिया में जो मीडिया है, फोर्थ एस्टेट जो कहा जाता है, फोर्थ पिलर जो कहा जाता है, देयर आल्सो योर पेन और राइटिंग जो भी है, ऑफ कोर्स नाउ इट्स नॉट जस्ट प्रिंट बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एज वेल. सो ये सभी है, तो ये सभी लोग एनलाइटन करते हैं, इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट्स वेरी रिलेवेंट, सोशली रिलेवेंट. सो एजुकेशन कैन ट्रांसफॉर्म नॉट जस्ट एन इंडिविजुअल बट ऑल्सो द एंटायर फैमिली एंड द एंटायर सोसाइटी. तो अगर एक कोई नेशन को एक सुपर पावर बनना है तो डेफिनेटली द वन ऑफ द फंडामेंटल थिंग दैट वी नीड टू बी डूइंग इज एजुकेशन. तो उसके ऊपर ही वेलोसिटी का जन्म है, या उसका आधार पर ही हम लोगों ने ये बिजनेस को, ये जो सर्विसेज है जेनेटिक्स के, इसके बारे में हम लोगों ने काम किया है. सो वी लॉन्च टू वेलोसिटी जेनेटिक्स in the month of May 2017. So we are now into our 6th year. And one of the things that we ensured कि velocity में हम लोग करेंगे, we'll start a platform where we can educate people. This is a new science. Genetics के बारे में या predictive health के बारे में इंडिया में काफी awareness नहीं है. अभी भी हमारी मानसिकता ये है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, पहले बीमारी तो आने दो, इतनी भी जल्दी क्या है. When we have diseases, we'll go to the doctor, and if the doctor then says कि भाई you've got a very serious condition, it's a beg, borrow, steal condition. We don't mind begging, borrowing and stealing money to save our life, but तब से पहले let's live for the day. So that's our mindset. So we thought we'll educate people. हम लोगों को बताएंगे कि ना केवल आपको क्यूरेटिव हेल्थ केयर तो आपको करना ही है, बिकॉज कोई चारा नहीं है, बट प्रिवेंटिव हेल्थ केयर कई सारे लोग इंडिया में करते हैं. पीपल हु आर डूइंग मास्टर हेल्थ चेकअप्स or a lot of health and wellness activities, like it could be right food or various kinds of physical activities, etc. But we thought we'll also talk to people about predictive health care, कि आपको भविष्य में क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, उसका जेनेटिक्स में ऑलरेडी आपके पास इंफॉर्मेशन है, उसको अगर आप पता करेंगे, and then if you make changes in your lifestyle, in your food habits, you don't need medicine, you don't need surgeries, and you can save a lot of money. लेकिन वो सब तब हो सकता है जब एक व्यक्ति इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए मानसिक तरीके से तैयार हो. he is prepared, or he is ready to accept that these science can help. So that's the reason we made an effort to start Velocity Institute of Genomics, Nutrition and Entrepreneurship Training. And what's our vision, what's our intention of this platform is that हमको create करने हैं genomic wellness professionals. जो भी लोग वेलोसिटी में हो, SHPL में हो, हम लोग जो हेल्थ एंड वेलनेस की बातें करते हैं, हम लोग बहुत आसानी से अपने आप को कह सकते हैं कि मैं एक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ, एक वेलनेस एडवाइजर हूँ. अभी वो जमाना गया कि जहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि एजेंट है, कि अभी LIC के व्यक्तियों को एजेंट नहीं कहा जाता है, उनको फाइनेंशियल एडवाइजर कहा जाता है. तो वी कैन से वी आर वेलनेस एडवाइजर्स, वेलनेस कंसल्टेंट्स. बट इफ यू आर डीलिंग विद जेनेटिक्स, अगर जेनेटिक्स की फंडामेंटल आप समझेंगे, you yourself can call that I am now a genomic wellness consultant. तो हम लोगों को ऐसे consultants को create करने की जरूरत लगी, and that's why we started Vignet. As you can see, it stands for an institute which talks about genetics, genomics. It talks about nutrition. आज nutrition के बारे में बहुत कुछ misinformation भी है. बहुत सारे fad diets को जो सेलिब्रिटीज करते हैं जीरो फिगर के लिए, लोग करके उनकी जाने चली गई है, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ अनसाइंटिफिक थिंग्स दैट वी आर डूइंग. तो जितने भी लोग अपने शरीर के बारे में, अपने हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, अपने परिवार से जो प्यार करते हैं कि मेडिकल एक्सपेंसेस कम हो जाए, उनको एजुकेट करने के लिए वी स्टार्टेड विग्नेट. सो जेनोमिक वेलनेस प्रोफेशनल्स ही नहीं बनेंगे, जो विग्नेट के जरिए जो हम लोग 2 महीने का CCNG सर्टिफिकेट कोर्स इन न्यूट्रीजेनोमिक्स जो देते हैं, वो अगर आप सक्सेसफुली कंप्लीट करते हैं तो यू विल देन बी कॉल्ड अ सर्टिफाइड जेनोमिक वेलनेस प्रोफेशनल और वेलनेस कंसल्टेंट. एंड खुशी की बात ये है कि 8th बैच में टुडे विल बी हैविंग 20 स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड दिस कोर्स सक्सेसफुली. दे विल बी सर्टिफाइड. तो रिजल्ट्स हम लोग आखिर में अनाउंस करेंगे, किसने कितना सक्सेस हासिल किया है, वो डेफिनेटली आप सुनेंगे इन अ वेरी एक्साइटिंग सेशन. सो प्लीज स्टे बैक. सो
ये स्लाइड अगर आप देखेंगे बारीकी से, जितने भी लोग अपने मोबाइल में या लैपटॉप डेस्कटॉप में लॉगिन किए हैं, स्क्रीन को देखिए। जब कोई भी व्यक्ति अगर एक बड़े सेलिब्रिटी या स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के साथ मिलजुलता है, तो उनके फोटोज आते हैं सोशल मीडिया में, यार इसके मिलजुलता है, वेदर इट शाहरुख खान, आमिर खान, बाराक ओबामा, सचिन तेंदुलकर के लुक अलाइक के लिए मतलब लोग उनको भी मतलब सेलिब्रिटी स्टेटस देते हैं, बोलते सचिन तेंदुलकर जैसे दिखते हैं, whether it's John Abraham or Aishwarya Rai. But the funniest thing is this is only facial similarity. थोड़ा फिजिकल एट्रीब्यूट सेम है उनके, हो सकता है कि उनका मोटापा, हाइट वाइट पूरा कुछ भी अलग रहेगा, लेकिन एक फेस में भी थोड़ी सी सिमिलैरिटी दिखेगी, नेशनल न्यूज हो जाता है, इंटरनेशनल न्यूज हो जाते हैं, मीडिया में सेलिब्रिटी बन जाते हैं। इट रियली फनी, सिंपली बिकॉज वो जितने भी मिलजुलते रहेंगे थोड़ी कुछ सिमिलैरिटी है, दे मे बी सिमिलर बट दे आर एब्सोल्युटली नॉट द सेम। तो अगर मिलजुलने वाले व्यक्ति भी अगर सेम नहीं है, जो हम लोग जो अलग अलग दिखते हैं, वी आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, बिकॉज हमारे बहुत सारे और भी चीजें हैं, हमारे सोचने का तरीका, हमारा इमोशनल कैपेसिटी टू थिंक एंड डाइजेस्ट, एडवर्सिटी आती है, मुश्किलें आती हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, स्ट्रेस आता है, एसएचपीएल में बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिखा रहे हैं, लोग साइन अप नहीं कर रहे हैं, तभी भी फ्रस्ट्रेशन आता है, उसको हम लोग कैसे डील करें, दैट डिपेंड्स ऑन आवर जेनेटिक्स। हमारी जेनेटिक मेकअप कितना स्ट्रांग है, कई सारे लोग हैं फर्क नहीं पड़ता है, कई सारे लोग हैं टूट जाते हैं, दिमाग खराब हो जाता है। सो दैट इज वाई हमको हमारी पहचान होना जरूरी है। हमारे पास कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जहां पे जाके आपको स्कैनिंग करके बता देंगे कि आपका क्या भविष्य है। हमको ये खोजना पड़ेगा, जिंदगी जीते जीते हमको पता करना पड़ेगा। सो दैट्स द रीजन अभी टेक्नोलॉजी आई है जहां पर अगर आप अपना जेनेटिक कोड को फाइंड आउट करेंगे, उसको आप एनालिसिस करेंगे, यू कैन फाइंड आउट मेनी एस्पेक्ट्स, फिजिकल एस्पेक्ट्स, इमोशनल एस्पेक्ट्स, योर बिहेवियरल एस्पेक्ट्स, everything that you can crack, and ऐसी टेक्नोलॉजी अभी आई है। It's a very very latest technology, and Velocity has been the pioneer and market leader in helping people do the sequencing. And एक अगर हम लोग एस्पेक्ट देखेंगे ये सीक्वेंसिंग में क्या होता है कि लोगों की बीमारियां आ जाती हैं। टुडे इफ यू लुक अराउंड, हमारी लाइफ स्पैन काफी कम हो गई है, 50 years more than what Ayurveda says. ग्लोबली देखेंगे, इंडियन पीपल आर लिविंग 15 years lesser than the progressive countries, क्योंकि बीमारियों से लोग मरते हैं आज। People die because of various kinds of diseases. So let's just an example, just a lighter example. We know about chicken pox. चिकन पॉक्स के सिम्टम्स क्या हैं, वो क्यों आता है, सभी को पता है। लेकिन अभी अभी हम लोगों ने सुना कि भाई मंकी पॉक्स भी आ गया है। तो अभी ये तो नया है मार्केट में, और खास करके जो वैक्सीन होने के बाद में कई सारे लोगों पे ये सिम्टम्स दिखने लगे। एंड आई एम श्योर बहुत जल्दी ये भी आ सकता है कि भाई डोंकी पॉक्स भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये है कि जितनी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है उतने नई नई बीमारियां भी आ रही हैं। तो हाउ डू वी रियली गो अबाउट इट, मतलब कैसे हम लोग अपना स्वास्थ्य को अच्छी तरीके से करेंगे? डू वी नीड टू रियली डू ट्रायल एंड एरर ऑल द टाइम? क्योंकि कई बार डायग्नोसिस टेक्स टू मच ऑफ अ टाइम, 3-4-5 years, एंड बीमारी पकड़ने में टाइम लगता है। कई बार हम लोग ट्रायल एंड एरर करते हैं एंड देन ऐसी दवाएं लेते हैं, बाद में पता चलता है कि वो बीमारी था ही नहीं जिसके लिए आप 2-3-4-5 साल से दवाइयां ले रहे थे। सो टिल दैट टाइम आपका लीवर किडनी तो चुप नहीं बैठेगा, वो भी बोलेगा यार मुझे कितना प्रेशर डाल दिया। सो दे विल स्टार्ट शोइंग द सिम्टम्स। सो फ्रेंड्स, टुडे we need to look at different mindset. हमारी स्वास्थ्य को देखने के लिए we need to really have a paradigm shift in our approach. So there is a disruption that's happening in technology, happening in the communication world, telecommunications, or internet. So many things. So new technologies are coming. Transportation में bullet train से जाके we are talking about hyperloops. We are looking at Japan wanting to do a ladder to the moon. मतलब unbelievable things are happening. तो वैसे ही हमारे जो कंज्यूमर ड्रिवन डिजिटल डिस्ट्रप्शन इज हैपनिंग इन द हेल्थ केयर सेक्टर एज वेल। तो हमको थोड़ा सा अपना पैराशूट खोलना पड़ेगा, एंड देन वी नीड टू बी ओपन टू न्यू आइडियाज। सो दैट्स द रीजन वी हैव दिस। एंड दुनिया में जो भी टेक्नोलॉजीज जो आगे बढ़ने वाली है उसमें अगर हम देखेंगे, सो एट 7th place इज द नेक्स्ट जनरेशन जिनोमिक्स। तो जिनोमिक्स जो है एक अजूबा है, एक साइंस है जो हमारे शरीर में क्या क्या बायो इंफॉर्मेशन है उसको अनअर्थ करने के लिए हेल्प कर देता है। सो वी कैन ऑल्सो लुक एट सम ऑफ द बिगेस्ट इम्पैक्ट द टेक्नोलॉजी विल क्रिएट। एंड एक इम्पैक्ट ये आने वाला है, गॉन आर द डेज जब आप अपने आप को डॉक्टर के पास लेके जाओगे, अपना टेस्टिंग करोगे, एंड देन यू विल गेट दैट मेडिसिन। आई थिंक टुडे व्हाट्स रियली गोइंग टू चेंज इज टेलीमेडिसिन. If you see today, a lot has been talked about blockchain.
blockchain is impact as per one of the estimate is at the lowest. It says just around 2%. जो पूरे दुनिया के 800 करोड़ लोग हैं उनके जिंदगी में ब्लॉकचेन will have a 2% impact, but telemedicine will have 29%. So that means एक जमाना था जहां पे आप एसटीडी बूथ में जाके आईएसडी करते थे या एसटीडी कॉल्स करते थे. टुडे एसटीडीज डोंट एग्जिस्ट, या आपके टाइपराइटर डोंट एग्जिस्ट, एचएमटी वॉचेस डोंट एग्जिस्ट, एम्बेसडर कार्ड्स डोंट आर नॉट देयर, नोकिया फोन्स आर नॉट देयर. वैसे ही अपना डायग्नोस्टिक बेस्ड जो हेल्थ केयर है दैट्स गोइंग टू हैव अ पैराडाइम शिफ्ट एंड इट्स गोइंग टू बी टेलीमेडिसिन बेस्ड ऑन अ लॉट ऑफ डिफरेंट अप्रोच टू लाइफ. तो इसके लिए दुनिया के मशहूर साइंटिस्ट ने जो 18 कंट्री को बिलोंग करते हैं, ऑफ कोर्स अनफॉर्चुनेटली कोई इंडियन उसमें नहीं थे, they came together in 1990 in the USA, and this is the team that started a project called the Human Genome Project. कि जो एक ह्यूमन बॉडी है उसको एक किताब की तरह कैसे पढ़ेंगे, and then they started this project and they found out that it's not just about understanding some bio information and दवा खाना, ये ही तरीका नहीं है. Your physical activities have a lot of impact. Your dietary habits and preferences of food also have a lot of impact. तो इसके लिए अगर हम होटल में जाते हैं, एक फैमिली जाती है, मेनू से फूड सिलेक्ट करने के लिए 10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि हर एक की टेस्ट अलग है, हर एक के चॉइसेस अलग है, बिकॉज उनका जेनेटिक मेकअप अलग है. सो नाउ देयर इज अ लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट डाइट, न्यूट्रिशन. जो योगा को हम लोग भूल गए थे, नाउ देयर इज अ इंटरनेशनल योगा डे, नॉट जस्ट इंडिया, द होल वर्ल्ड इज फॉलोइंग दिस अप. सो नाउ पीपल हैव वोकन अप टू दिस फैक्ट दैट हमको प्रकृति के साथ रहना है, नेचुरली रहना है. देयर इज अ लॉट ऑफ डिमांड फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ऑल ओवर. सो फ्रेंड्स, एक सच्चाई ये है, आवर फूड चेंजेस आवर जीन्स, या हमारे जीन्स के एक्सप्रेशन को चेंज करता है. एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वी केम टू नो. इसके लिए ये साइंस जो है इसको कहते हैं न्यूट्रीजेनोमिक्स. जैसे आपके व्हीकल्स के लिए पेट्रोल या डीजल लगता है, थोड़ा सा इंजन ऑयल लगता है, हमारा शरीर भी चलने के लिए, वो भले अमीर हो या गरीब हो या मिडिल मध्यम वर्ग के व्यक्ति हो, उनको खाना लगता है, उनको फूड लगता है. बट एसेंशियली व्हाट इज ईटिंग इज न्यूट्रिशन. लेकिन क्या जो हम लोग खाना खाते हैं उसमें एडेक्वेट न्यूट्रिशन है या नहीं, या किस प्रकार का न्यूट्रिशन की जरूरत है, दैट इज एग्जैक्टली इज द साइंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग न्यूट्रीजेनोमिक्स. की जेनेटिक्स, आपके जेनेटिक मेकअप के हिसाब से आपको क्या खाना चाहिए. हम लोग एक दूसरे जैसे दिखते नहीं है, हमारे फिंगरप्रिंट सेम नहीं है. इसका मतलब ये भी है कि आपका खाना भी सेम नहीं हो सकता है, आपका दवा भी सेम नहीं हो सकता. इट हैज टू बी पर्सनलाइज. तो इसके लिए आगे जाके पर्सनलाइज न्यूट्रिशन, आगे जाके क्या ऑलरेडी ये स्टार्ट हुआ है ट्रेंड, दैट पीपल डोंट वांट टू ईट जस्ट फॉर हंगर एंड फॉर स्टाइल, या फॉर मतलब कि भाई खाना खाना है इसके लिए नहीं. आपको इसमें भी you need to know the science and art of eating the right food. So personalized nutrition जो है is the right thing to do, because जो health conscious हैं उनको ये पता है कि वो क्या खाते हैं. Look at sports people, तो ऐसे कुछ भी जंक फूड नहीं खाते, because they want to be very fit. So this is what we need to do. So what's the thing that we are advising in the in Vignet, in CCNG course is अंडरस्टैंड कि आपको न्यूट्रिशन के बारे में फंडामेंटल जानकारी होनी जरूरी है, आपको जेनेटिक्स के बारे में फंडामेंटल जानकारी होनी जरूरी है. आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे पास पैसे हैं, इंश्योरेंस है, इन्फ्लुएंस है, डॉक्टर को जानते हैं, जो होगा देखा जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, डॉक्टर मुझे ठीक करेगा. ये नहीं है, ये लिटिल ओवर कॉन्फिडेंस है. ये डॉक्टर्स भी आके सॉरी बोल देते हैं कि भाई मेरे से होगा नहीं. सो फ्रेंड्स, व्हाट वी नीड टू रियली अंडरस्टैंड इज दैट एपिजेनेटिक्स, मतलब शरीर के बाहर जो भी चीजें होती हैं, वेदर इट इज न्यूट्रिशन, योर स्लीप पैटर्न, योर विटामिन लेवल्स, योर फिजिकल एक्टिविटीज, योर स्ट्रेस लेवल्स, योर एडिक्शन, ये सभी को आपको एसेस करना पड़ेगा. बिकॉज आप अपने हेल्थ को कहीं दूसरे के ऊपर जिम्मेदारी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो ना बोलेंगे तो आपके पास कोई दूसरा प्लान भी नहीं है. सो आपके लिए आपका डाइट क्या है. SHPL में जितने भी सप्लीमेंट्स हम लोग बेचते हैं, कि मेरे लिए कौन सा सप्लीमेंट जरूरी है और कितनी मात्रा में जरूरी है और मुझे कितने समय तक लेना चाहिए, अगर ये आपको समझना है, आपको जेनेटिक टेस्टिंग करना पड़ेगा. सो इसके ऊपर बहुत सारे साइंस हैं, एपिजेनेटिक्स एंड एंटी कैंसर किचन, मतलब आपका ऐसा किचन हो जिसमें आपको कैंसर आने की संभावना ही नहीं है, अगर आपके पास वो जेनेटिक मार्कर है या आपको रिस्क फैक्टर्स हैं. सो दोस्तों, पर्सनल न्यूट्रिशन का कमर्शियली अगर देखेंगे, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट जो है 7.03% से बढ़ रहा है. मतलब दिस इज अ वेरी गुड साइन. Anything above 5% as an industry is a very good segment to work in. So personalized nutrition के लिए commercially भी बहुत सारा scope है. So I want some of you, जो आज 20 students तो है ही हैं, certify हो रहे हैं, and they'll share their experience as to उन्होंने क्या सीखा.
बट बहुत सारे और लोग हैं, अगर आप जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट बनते हैं एंड अपने आप को सर्टिफाई करते हैं, वी आर श्योर दैट यू आर नाउ ऑथोराइज्ड to speak about this subject a little more authoritatively. Human epigenetics and how science works, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें हैं. टाइटल देखिए इस किताब का, ये बोलता है you are what your grandparents ate. आपके दादा दादी ने जो खाया है, मतलब न्यूट्रिशन, उसके बेसिस पर आपका हेल्थ अभी निर्भर है. उन्होंने जो खाया, मतलब 100-150 साल पहले उनका क्या फूड हैबिट्स थी, उसके ऊपर आपका हेल्थ है. सो व्हाट यू आर ईटिंग राइट नाउ ऑल्सो मैटर्स कि आपके बच्चे या पोते पोते का हेल्थ कैसा होगा, बिकॉज आप वो जेनेटिक्स में या आपकी जो जीन्स से आप अपनी इम्यूनिटी को भी अपने खानदान को गिफ्ट देते हो. सो देयर इज अ लॉट ऑफ बुक्स एंड देयर आर लॉट ऑफ साइंसेस. सो इट्स एन एडवांस साइंस. एंड जो भी SHPL के साथ जुड़े हैं, वेलनेस के सप्लीमेंट्स बेचने वाली 100 कंपनियां हैं इंडिया में, लेकिन हाउ आर वी डिफरेंट, क्योंकि हम लोगों को ये भी हेल्प करते हैं कि भाई आपका एनालिसिस करें एंड उसके बाद में हमारे पास जो 150-200 सप्लीमेंट है, ये हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे, बिकॉज मैं एक सर्टिफाइड जेनोमिक वेलनेस कंसल्टेंट हूँ. सो ये आपको करना पड़ेगा. सो फ्रेंड्स, विग्नेट में हमारी ये कोशिश है. सो ये जो कोर्स हम लोग दे रहे हैं CCNG, हम लोगों ने 8 बैच अभी कंप्लीट किए हैं. सो दिस इज अ 2 मंथ सर्टिफिकेशन कोर्स इन न्यूट्रीजेनोमिक्स. तो इसमें आप एक प्रोफेशनल बन सकते हो, फॉर सीरियस पीपल ओनली. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई वेबिनार में आके मोटिवेशन होके बिजनेस करना है तो ठीक है, वो एक अलग तरीका है, बट आप अगर प्रोफेशनल बनना चाहते हो, दिस इज फॉर यू. सो बैच 9 वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑन नेक्स्ट सैटरडे, दैट इज 16th of July. So registrations can happen till 15th of July 2022. ये ऑनलाइन कोर्स में आपको 50 चैप्टर आपको स्टडी करने पड़ेंगे एंड ये इंटरैक्टिव ऑनलाइन क्लासेस भी रहेंगे, जहां पर हमारे फैकल्टी आपको बता देंगे कि क्या कोर्सेज हैं. सो 16 आवर्स ऑफ क्लासेस एवरी सैटरडे सुबह 10 बजे से 12 बजे फॉर द नेक्स्ट 8 वीक्स, मतलब 2 hours into 8 weeks is what you can study. So this is our faculty. Apart from me, we have Mr. Milind Doshi, Dr. Bimal Karani also might sometime join in, and we have our senior nutrigenomic counselors and nutritionists. They're all postgraduate and practical experience of minimum 12 years is what they have, तो सिखाते हैं. सो आज का वेबिनार ये है, सुपर सैटरडे में ये है कि 8th बैच में जितने भी लोगों ने ये स्टडी किया है और सक्सेसफुली पास ऑन किए हैं, उनको सर्टिफाई करना है. तो हम लोग इसके लिए टेस्ट देते हैं. एवरी चैप्टर में 5 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस हैं. वो अगर आप आंसर करते हैं, ओनली देन आपको नेक्स्ट चैप्टर का एक्सेस मिलता है. ऐसे आपको 50 चैप्टर सीखने पड़ेंगे, पढ़ने पड़ेंगे, वीडियोस देखने पड़ेंगे, क्लासेस अटेंड करने पड़ेंगे. अगर ये करेंगे, अगर आप 60% से ज्यादा स्कोर करते हैं, देन यू आर इन द फर्स्ट क्लास. अगर आप 80% से ज्यादा स्कोर करते हैं, यू आर डिस्टिंक्शन. एंड 90% से ज्यादा स्कोर करेंगे, यू आर अ रैंक होल्डर. तो ये आज हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने वाले हैं. सो आई वांट रियली टू स्टे बैक and I'll come back later in the day in the webinar to announce what the results are. So thank you very much. Back to Dr. Usha. Thank you so much, Stan sir. That was a wonderful keynote. And मुझे ये confirm है कि अगर आप लोगों को सर ने जो बताया, जो जानकारी थोड़ी सी दी, अगर आपको वो पसंद आई है, तो friends, go ahead, take the link, register for the course, and इसमें आप पूरा अपना विचार बदल पाएंगे, आप अपनी लाइफस्टाइल बदल पाएंगे, और आप ये सही चीज, सही खाना, किस वक्त, सही फिटनेस, सब कुछ अपनी जिंदगी में अडॉप्ट करके एक परमानेंट हेल्दी लाइफ जीने का आपके पास ऑप्शन है. ले लो या छोड़ दो, इट्स टोटली अप टू यू. वेल फ्रेंड्स, आई सी अ फ्यू पीपल पुटिंग देयर हैंड्स अप. तो मैं ये कहना चाहूंगी, अगर आपके कोई सवाल है, कोई डाउट है, प्लीज होल्ड इट ऑन टिल द एंड ऑफ द वेबिनार, or you can put it in the chat, and please do not put your phone numbers in the chat. हम किसी को अपने एक दूसरे के फोन नंबर की जरूरत नहीं है. अपने एंटायर SHPL, वेलोसिटी, विग्नेट, सबके डेटाबेस में सबके बारे में जानकारी है. So don't put numbers, don't keep typing in the chat unless asked, क्योंकि वो थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्शन होता है. वेल फ्रेंड्स, अगर एक अच्छी टेक्नोलॉजी, एक अच्छे विचार, एक अच्छी सोच के साथ कंपनी आई है, तो उसके पीछे, बिकॉज दिस इज साइंस, बिकॉज दिस इज वेरी एडवांस टेक्नोलॉजी, सो हमें एक टेक्नोलॉजी पार्टनर, हमें एक चीफ प्रोडक्ट ऑफिसर चाहिए कि हमने अपना सलाइवा सैंपल दे दिया, आगे क्या, आगे ऐसा कौन एक्सपर्ट है जो एक्चुअली हमें ये बता सके कि आपके जीन्स में क्या है, वो साइंटिफिकली उसे एसेस करें,
उनकी टेक्नोलॉजी को इन प्लेस लाके समय पे हमारे सैंपल्स प्रोसेस करके एक रिपोर्ट दें, और हमारे जो न्यूट्रीजेनोमिक काउंसलर्स हैं उनको एक दिशा मिले, एक गाइडेंस या फिर एक साइंटिफिक एविडेंस मिले कि आगे कैसे हमें एक्शन प्लान बना के लोगों की जिंदगियां हेल्दी रखनी है. Well, it gives me immense pleasure. I have known him also for almost 5 years now that I know Velocity Genetics, and he is a serial entrepreneur, young and dynamic, talented. He is actually a researcher. Science में जो research करते हैं ना, वो वाला real science में researcher. He is the business head of Positive Biosciences Limited, and he is the pioneer of genetics research in India. ये इंसान is somebody who is the CEO of Sanger Genomics Private Limited, जो Velocity Genetics से पहले दिन से exclusively tied up है, और अभी वो SHPL में भी हमारा साथ देंगे. He is a graduate from Babson College in USA. He is certified in nutrigenomics from Monash University, Australia. And yes, he is actually very keen student with the cutting edge technologies, and very he's done a lot of online certification courses from Harvard University and London School of Economics. And yes, he has been our science, our knowledge partner, our information technology person, none other than, I'd like to invite our Chief Product Officer, Milind Doshi sir. Milind sir, aap hain yahan? Let's go to Dr. Arora, Dr. Usha. Yes, will be joining in some time. I think बारिश की वजह से he's slightly not logged in yet, but as soon as he comes, we'll hear from him very soon. He's there right now, but I just setting things up. Okay, we'll take him up as the next speaker. Yeah, now I think we can do this. So our next very special guest of honor here today is a senior. He's been a very big guiding force in my life, in healthcare, in the hospital administration space, my guru, my guide. He's a global speaker on electromotive force. He is a mainstream MBBS. He is a retired Air Commodore. So from armed forces to medicine to medical administration, clinical, non-clinical, his past stint was with Apollo Hospitals, where he was the head of the cardiac rehab department. And now, being a general physician, being a senior consultant rehabilitative medicine, now he has ventured into his next level, where I said he is a global speaker of EMF technology. So it gives me immense pleasure, a big guide, a big driving force in my life, in my professional career in healthcare, and always available, all the way from Hyderabad, retired Air Commodore, Dr. HSR Arora. Sirji, over to you. Maybe 5 minutes, but let's hear it from you. What is your thoughts, your ideas? Thanks, Usha. And it's so nice to hear from you and all. First of all, I would thank Velocity. You know, it's a great work. You will be surprised in a time to come, probably 10 to 15 years down. Today I'm 75, by then I'll be 85 and all, if there. The genetic science is going to be the mainstream medical science. I was, analyzing genetics with AI, artificial intelligence. This will remove all laboratories. So it's such a huge and important science as such. I wish to give a bravado to Velocity for training soldiers in genetic system. All the people, those who are going to pass out today, for me, they are soldiers. Why they are soldiers? I was last month working on different terrorists which are working inside our body. So they are called neuroterrorists. They directly enter, it affects every aspect of our genetic system. Look at the MSG, monosodium glutamate, aspartame, sucrose, diacetyl, aluminum. We all these things day-to-day eating. We do not know. So these soldiers will identify and capture and destabilize all those. Then comes GIT terrorists. You can imagine what we are eating. Nutrigenomics has said about it. We are destroying our, gut biomes, microbiomes.
You will be surprised. In 99, I worked on different microbiomes, that is mouth, eyes, nose, GIT, your respiratory system, your reproductive system, and your kidney functions. And we found huge amount of these information, but those days, genetic science was not so profound, but now it is there. So this terrorist of every organ is listed. Since there is no time, otherwise I can list everything I had worked on all these issues. Another thing genetic system will do, strengthen your autophagy system. It is the biggest step towards cancer protection. All cancer cells can be killed by our own body, but we need to know whether they are there or not. If it is not there, who is causing loss of that? Who is a terrorist for them? Then comes a very interesting thing I'll read out from my book of early 70s. We always say genetic is a gift of what is, Western world and all this. No. 2000 years earlier, Manu Smriti, it is a huge book. I was reading that, the full of Sanskrit. He had said very interesting thing. I'll read in a Sanskrit. Aspinda chaya mature, sangotre chaya piture, sa prashastina vidvajati namo dar karmanne mathune. Means you should not be marrying for 7 generations in the same family. Then you cannot protect any disease which is going to spread out. From the last few years, I have been working on something known as a EMF. People are not aware of it world over. You have heard about Chernobyl, what happened there. You have heard about Japan bombs which were dropped. There are 20 islands in the world where Russia, US, a lot of countries have been testing their nuclear arsenals. They are generating huge amount of EMF, electromagnetic force. Chernobyl, what has happened recently? The war which is going on Ukraine, there is a huge movement of transport into that area. The dust is flowing, it has reached to Europe. It is known to cause thyroid cancer. It is known to cause leukemias of varieties. So we need to be fully aware that the genetics have a huge role to play to analyze. I was telling Usha, people, those who came from Ukraine, they should have been subjected with this protocol and checked it up on all those issues. EMF causes genetic mutation. It causes genetic break. It causes genetic or epigenetic issues in the body, and it destroys sometimes the chromosomes. There is a huge, you imagine what kind of a diseases it can be caused. I'll just share it with you. Mother nowadays, the child is not eating food, gives a tab, it's a picture, watch karo. What he's getting at the gift, he's getting at autism, he's getting at ADHD problem, which has got no treatment. A lady who is hanging a mobile phone between on her chest, there is a 90% chance she'll get a breast cancer. We generally use, name is their laptop. We lie down on the bed, put it in our lap. Male, his reproductive organs cancer will develop. Female, ovary, tubes, uterus, cervix cancer will develop. If the evidences are all filled up. So immunologically, there are a lot of issues are taking. I was testing very interesting thing. Air pollution, what happens subsequently in the air, all those chemicals, dust, you name it, it is there. When it is mixed with the radiations which are coming from space or high-end technology, it becomes a nano bombs. You inhale, it enters into your lungs. With your food and GIT, they start destroying from 1 to 2nd, everything. It's become a very unique process. Since I am a global speaker on this science, it's an area which needs to be explored, and new soldiers, they need to look into this direction, because time is coming. If we do not control this, we are going to land up into issue. Another thing, I recently worked it out. You all will be surprised. There are a lot of doctors there.
We consume all these tablets, medicines day to day. Do you know every medicine is wrapped in aluminum foil cover? And what is the toxicity of aluminum? We all know it's basically a neurotoxin, total bad neurotoxic. Genetics have a role to assess this, check this. If it is there, we can change these wrappers, remove it totally. When I was working with NASA, you will be surprised, they had at the list biryani from Hyderabad for International Space Station. But later on they stopped. Reason being, those biryanis were made in aluminum utensils, which used to have a kali of mercury in that. So they were getting a slow poisoning into that biryani, which is going in an International Space Station, which is at the space level. You yourself will surprise high radiation. There are a lot of Air Force pilots who fly at, at orbital level. So orbital level, when you're flying, you may be sitting in a fighter aircraft thinking I'm totally protected, but no. The solar radiation is known to cause multiple myelomas in their body, which is a cancer which cannot be treated. So these are the issues which are developing in a big way. Cellular level, very interesting thing takes place. Have you heard a lot of good athletes are dying in the field just like that? They are getting exposed to all these radiations. Ending result, their mitochondria are disappearing. Going heart, each muscle has got, each cell has got 5,000 mitochondria. Moment it is damaged, he will start developing palpitation or low heartbeat. And if it is not detected, he loses life. In this 2 years, there are 30 such athletes which were Olympians and all. They have vanished. Footballer, cricketers, or you name it, athletes, 100-meter dash. So it's a very interesting thing which is taking place. I was working on a COVID issue. I've seen around 22,000 cases in this COVID, and they're all on telemedicine protocol. We detected, do you know what? Though they were discharged from hospital, there were 7 cases which came to me finally. The recent blood test showed chronic lymphatic leukemias. Can you ever imagine? And the doctors raised the points. No, this will become all right. I said no. If he's got 82,000, neutrophils, there is something we need to analyze it. And we analyze all those 6 cases from me. 3 finally died, 3 are surviving, and they are under treatment for leukemias. Another very interesting, we all know post-COVID syndrome, which is going on. Huge role of genomics are there, huge. After COVID infection, a lot of people do not get positive result, but the body has got virus. Where it stays, can you imagine? It stays in bone marrow. It stays in testis. It stays in very interesting place, blood-brain barrier cell. So they can be analyzed. All these can be analyzed when we do our testing through our genetic systems. Yes, he's got that. So we need to treat him for that purpose. Then comes. So much, Arora sir. It was really wonderful. Actually, हम में से बहुत सारे लोगों की ये थोड़ा सा सर पे से जाता होगा. But friends, trust me, जब आप इस साइंस में, इस कोर्स में रजिस्टर करेंगे, तो सर जो कुछ भी कह रहे हैं, हम उनको एज अ गेस्ट स्पीकर डेफिनेटली लाते हैं, एंड ही गिव्स अस दैट नॉलेज कि ये हम कैसे इसके बारे में बता सकें और ये इस्तेमाल कर सकें. So you can prevent cancer, you can reverse diabetes, you can reverse heart diseases, you can reverse your kidney issues, you can simply stay healthy. Well, friends, now we have our dear friend, Mr. Milind Doshi here, a well-updated technocrat with massive ambition and immense talent. It gives me great pleasure always to welcome this guy who tells us the latest in genetic technology. Over to you, Milind sir. Thank you, Dr. Usha. Kaise ho, bhai aur behno? It is a great pleasure to be here today. As usual, I always enjoy coming and sharing some new light on new sciences. But I just wanted to address the previous speaker, Dr. Arora.
I think what you are researching, sir, is absolutely spot on. Electromagnetic frequencies. I did not know. I don't know if you know this, but I have discovered a link between epigenetics and electromagnetic frequencies. And we always say that when there's so many factors around your DNA that can influence your gene expression, it may not be able to change the genetic code, but how and which genes express is being controlled by the nutrition, by the stress levels, by supplements, by medicine, by herbs, जो हम खाते हैं. So if you are able to understand that the DNA is actually triggered by electromagnetic frequencies of the invisible that are embedded in the food we eat, you know, that is really the secret that most people forget. So भाई और बहनों, ये जो हम खाना खाते, it all works through the mechanism of electromagnetism ultimately in the body as well, and that is a new finding that has been researched for years, but अभी ये surface पे आ रहा है. आपको आप शायद you all might know that there was a doctor called Luc Montagnier who passed away after COVID recently. He was a Nobel Prize winning scientist from France, जिन्होंने HIV वायरस का DNA सीक्वेंस किया था और डिस्कवर किया था. और उसका लेटेस्ट रिसर्च आफ्टर विनिंग द नोबेल प्राइज फॉर डिस्कवरिंग HIV virus, his whole future was based on calculating or measuring the electromagnetic frequency of DNA of a diseased patient, and how that electromagnetic signature of the DNA can be transmitted through water. Pani peene se, your intention that goes into it of a sick person can actually affect the expression of the DNA of the person drinking that water somewhere else. ये उनका research था. तो ये बहुत माइंड ओपनिंग एंड नई बात है, क्योंकि हमने कभी भी सोचा नहीं था कि एक्चुअली जस्ट सिंपली बाय बिकॉज पानी जो रहता है ना, इट इज नोन एज अ लिक्विड क्रिस्टल, एंड क्रिस्टल्स हैव अ मोलेक्युलर स्ट्रक्चर दैट कैन स्टोर इंफॉर्मेशन. So जब पानी comes in contact with the frequency, it changes its structure, and whatever that frequency information contains, it remains in the water. And इसलिए before we have water, I would leave this new word of wisdom with you. जब पानी पीते हो, put your finger in the water and say thank you, feeling of gratitude. Have a good mantra in your mind, like say Om, and that frequency you put into the water before you feed it to your family and you drink it yourself. और यही reason है जिसलिए why we all should be praying before we eat our food. You know, they're saying and praying doesn't mean asking Bhagwan for things. It means showing gratitude. Expressing gratitude is important because the frequency of the food also contains water, and that also changes. And that's why it is important to have these habits in life, which we have ignored, saying there's no need. As the younger generation, hum ye log, all these older historical ancient religious advice we have ignored as non-scientific. Why should we do it? But actually my research has pointed me to the level saying that there is so much science in that. It is amazing to me that they had this kind of awareness without genetics, without this new research. Can you hear me? Yeah. Great. So yeah, that is what I wanted to share with you. In the world of DNA, आजकल अभी बहुत सारे innovations आ रहे हैं. Doctor was absolutely right. In the future, of healthcare, genetics is going to become the primary tool to look at to solve all diseases. अभी मैं नया book पढ़ रहा था ये हफ्ते में. This is called Super Genes. It's a book from Deepak Chopra. And इसमें एक नई बात लिखी थी, which I have never actually come across. उसमें एक नई बात लिखी थी कि only 5% of the DNA that causes a certain disease is enough to make to guarantee that you will get the disease in your life.
तो अगर लेट्स अज्यूम हमारे डीएनए में 3 बिलियन बेस में से there's a certain disease like diabetes, right? There are hundreds of genes involved in diabetes, but if only 5% of the DNA that are genes that are involved in diabetes, if you understand what they are and if they carry the novel mutation, it pretty much guarantees that you will get the disease. And ये knowledge हमको कभी भी पता नहीं था क्योंकि we work on algorithms to find out which genes are causing predisposition to a disease. But the new research is that only 5% of the key genes are necessary for guaranteeing the disease in a person. So this actually makes our report and our research and our pursuit to give accurate information much more closer, because we were always on the pursuit to find the genes and find the algorithms. But abhi, the goalpost has come closer to us with this awareness that, oh God, we are already beyond the 5% benchmark. So our predictions are even that much more accurate than we also realized. So मैं वो आपको share करना चाहता हूँ. Great, Milind sir. You always bring a bhandar of knowledge for all of us. And friends, again, Milind sir is another very good speaker on the topic who will give you very interesting sciences, and he always comes whenever we call him in spite of his busy schedule. So it's a very big thank you to Milind sir and Arora sir, क्योंकि Milind sir हमें 5 साल पहले से साथ दिया है और जेनेटिक टेस्ट और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ हिज कीन इंटरेस्ट एंड द रिसर्च एंड एविडेंस दैट इज गोइंग अराउंड ग्लोबली विच ही ब्रिंग्स टू अस. वेल फ्रेंड्स, अभी हमारे साथ हमारे नेक्स्ट गेस्ट ऑफ ऑनर इज द पर्सन हु इज वेरी वेरी सेल्फ मोटिवेटेड, विजनरी, यंग एंटरप्रेन्योर who has been he has always been in the forefront of SHPL. उन्होंने हमेशा अपने एक्सपीरियंस, वेदर इट वाज रियल एस्टेट, वेलनेस, डायरेक्ट सेलिंग, सब कुछ कंबाइन करके उस नॉलेज को एक अलग लेवल पे बिजनेस डिसीजंस में उसको आजमाया है. एंड दैट इज हाउ SHPL is a powerful value-based business today, and it is growing day by day and becoming, like I said earlier, India's most popular, fastest growing brand. He is a very good leader because his leadership skills, ability to take risks, quick business decisions, efficient implementation, his skills, he is a very, very unadorable face of the company. Well, it gives me immense pleasure to actually invite and welcome none other than the chairman and managing director of SHPL, Gopal Kunduji. Your views and your thoughts. थैंक यू. और मैं सबसे पहले उषा मैडम, आप आज का जो प्रोग्राम है बहुत एंथुसियास्टिक के साथ आपने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. और अभी मैंने सर को भी सुना और सब लोगों के साथ नाम के साथ तो इतना उभरू नहीं, लेकिन आज जितने भी चीफ गेस्ट है सभी लोगों को मेरे तरफ से प्रणाम. और आप लोगों ने इस मीटिंग में आए और सब लोगों के बारे में, ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बारे में लोगों को हुबहू कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा एक मिशन है. हालांकि मैं बात करना चाह रहा हूँ स्टैन सिडाउ सर के साथ. जब मैं 23 साल उम्र था, 23 साल उम्र में मैंने स्टैन सर के साथ मिला. अभी मेरा 40 है. सो लास्ट काफी सारी चीज मैंने उनसे सीखा और मुझे मौका मिला स्टैन सर और मिलके एक साथ काम करे. वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी जो जेनेटिक्स है, जो जेनेटिक बेस्ड वेलनेस सॉल्यूशन है, एक नया कॉन्सेप्ट था. जब मैं ये चीज को देख रहा था, मतलब स्टैन सर 5 साल पहले शुरू किए थे, तो मैं ये सोचा था ये स्टैन सर से पॉसिबिलिटीज है. और सबसे बड़ा चीज है, कोई चीज को लॉन्च करना कोई बड़ी बात नहीं है. ये जेनेटिक्स के ऊपर काफी सारे कंपनी ने ट्राई कर चुके हैं और स्टैन सर वेलोसिटी का पायोनियर है. और मैं सिर्फ स्टैन सर को आज के तारीख में मैं थैंक्स बोला नहीं जा रहा हूँ. स्टैन सर के साथ जितने भी लोग इस कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे आज उषा मैडम जो एंथुसियाज्म के साथ आप इस प्रोग्राम को होस्टिंग कर रहे हैं, और बाकी जितने अपने चीफ गेस्ट है, डॉक्टर सर भी, अभी मिलिंद जी को भी सुना, सभी लोगों के पास बहुत अच्छे नॉलेज है. सो मैं भी वेलनेस मिशन लेके काम कर रहा था और मुझे ये कंपनी जो खुलना था, मैं ऐसे ही खोल दिया था. मतलब कोई प्लानिंग लेके मैंने इस कंपनी को नहीं खोला था. मतलब एक सिचुएशन सर्कमस्टेंस ऐसे बना और मैंने ये कंपनी खोल लिया था. लेकिन मेरे एक कैप्शन था, हेल्दी लिविंग बाय नेचर. मतलब नेचर के साथ हमें इस जीवन को जीना है. लेकिन पहला बात है, अभी डॉक्टर सर ने जो बताया कि आज अगर बिरयानी का भी जो पैकेट आता है, वो बिरयानी जो हम लोग खाना जो लेकर आते हैं, चाहे कहाँ से भी आए, हैदराबाद से, वो केमिकल के साथ ही आ रहा है. आज अगर हम माइक्रोवेव के बारे में बात करेंगे, जो खाना गर्म कर रहा है, उसके अंदर हम लोग खाना तो गर्म करके खा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी आ रहा है. आज अगर हम फ्रिज से कोई खाना निकल के खा रहा है, चाहे आइसक्रीम में कुछ भी, उसके अंदर भी ये केमिकल ही आ रहा है. सो एयर, फूड, वाटर, ये तीनों चीज के ऊपर अपने पास मिशन है. अगर हम बात करेंगे अपने कंपनी में एयर प्यूरिफाई है, अगर वाटर के बारे में बात करेंगे तो अपने पास अल्कलाइन मशीन है, और सप्लीमेंट प्रोडक्ट के ऊपर काफी सारे चीज है.
सो मैं लोगों को एक ही चीज बोलता हूँ, क्योंकि यहाँ पे काफी प्लेटफॉर्म के अंदर काफी सारे डॉक्टर को देख रहे हैं, उनके सामने बोलने के लिए मुझे हिम्मत नहीं हो रहा है, फिर भी कोशिश ये करेंगे। आज हम लोग वाटर, फूड और एयर, ये तीनों चीज हम ना चाहते हुए भी इनटेक कर रहे हैं, और ये तीनों चीज से अपने शरीर के अंदर केमिकल आ रहा है, और हम उसको बोलते हैं कि अपने शरीर के अंदर जब आ रहा है ये काफी सारा टॉक्सिन जो हम लोग इनटेक कर रहे हैं यार, इसको डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हम लोग काफी सारा प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, लोगों को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं कि भाई ये प्रोडक्ट यूज करो, किसी के घुटने में दर्द हो रहा है ये प्रोडक्ट करो, किसी को सीने पे दर्द हो रहा है ये प्रोडक्ट यूज करो। तो हम लोग सब लोग डॉक्टर बन चुके हैं, लेकिन हम बिलीव करते हैं कि इस दुनिया में कुछ भी कर रहे हैं, सबसे अगर हम किसी को प्यार करते हैं, खुद को प्यार करते हैं, राइट। सो सबसे पहले मेरे जीवन के अंदर मैं सबसे पहला एसेट में खुद ही हूँ, और आज हम जो भी लड़ाई कर रहा है, ये अचीवमेंट पाने के लिए कर रहा है, सब भी लोगों के पीछे कुछ ना कुछ कारण तो छुपा हुआ है। लेकिन मैं बोल रहा अगर मैं ही नहीं रहूंगा और मैं ही अगर स्वास्थ्य नहीं रहूंगा तो हाउ इट इज पॉसिबल। सो मुझे मिला है कि मुझे जो लग रहा है कि हमने जो जीनोमैक्स प्रोडक्ट को जो लॉन्च किया, जीनोमैक्स का जो मैंने डिजाइन किया, ये स्पेशली ब्लैक कलर का मेरा काफी अच्छा चॉइसेबल डिजाइन था। तो स्टैन सर के साथ बात करके मैंने इस प्रोडक्ट पैकेज को डिजाइन किया, और मैंने स्टैन सर को बताया कि स्टैन सर एक वीडियो बनाता है, तो शायद ये वीडियो भी आज लॉन्च होंगे। सो मैं बहुत एक्साइटेड इस प्रोडक्ट को लेकर काम करने के लिए, और जितने भी ऑनरेबल डॉक्टर और जितने भी आज इस प्रोडक्ट के साथ टेक्निकल आप सभी लोगों को साथ चाहिए, मैं दोबारा आप लोगों को SHPL प्लेटफॉर्म में आप लोगों को वेलकम करना चाह रहा हूँ, और ना केवल वेलकम करना चाह रहा हूँ, आने वाले दिन के अंदर जो भी हम इवेंट करेंगे, स्पेशली मेरे तरफ से आप लोगों को इन्विटेशन रहेंगे, जहाँ पे हर एक चीज कंपनी खुद अरेंज करेंगे। और मैं चाह रहा हूँ ये जो एक मिशन इस बिजनेस के बारे में ना रहा है, आज ये कल्चर जो लोगों को जाना चाहिए। आज अगर इस टेस्ट करके मुझे मेरा फ्यूचर दिखता है, आज हम लोग लोगों को हाथ दिखाता है, दिखाने के बाद स्टोन ले लेते, लाख 2 लाख 3 लाख रुपए का स्टोन, हमें पता नहीं कि वो स्टोन काम करेगा नहीं करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अगर ये टेस्ट अगर हम लोग करते हैं, सलाइवा टेस्ट करके अगर मुझे मेरा जीवन का कहानी मिल रहा है, और ये जीवन का कैसे जीना है, और ये मुझे करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम पैसा में हम लोग इसको अरेंज करके दे रहे हैं, और सिर्फ इस प्रोडक्ट को आप लोगों के घर पे एक सैंपल किट के हिसाब से नहीं भेज रहे, इसका सॉल्यूशन दे रहा है। और मुझे लग रहा है कि वेलोसिटी के अंदर जो टीम है, ये सफिशिएंट टीम है इस चीज को कवर करने के लिए। ये वेलोसिटी के लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि SHPL में आके इस प्रोडक्ट को, मतलब जो सोच है, लोगों के घर घर पे लेकर जाए, और SHPL को भी एक मौका मिला है, जिस प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च किया, जिसका फाउंडर वेलोसिटी है, इस प्रोडक्ट को SHPL के प्लेटफॉर्म के अंदर लेकर आए। और टाइम बहुत ही कम है, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, जितने भी SHPL के फैमिली मेंबर्स है, मैं सिर्फ बोलो इस प्रोडक्ट के बारे में जाने, और आज एक वीडियो लॉन्च करेंगे जो इंग्लिश और हिंदी में आपको सुनाया जाएगा, और हर सुबह हम लोग प्रोग्राम को कर रहे हैं। जीवन के अंदर कुछ करो ना करो, एक काम जरूर करो, इस प्रोडक्ट को लो और इस प्रोडक्ट को टेस्ट करो। अगर खुद को प्यार करते हो और अपनी जीवन कहानी को देखना चाहते हो, महाभारत के युद्ध के अंदर हमने देख लिए थे कि जब अर्जुन जब आपके ऊपर पिता माता के ऊपर जब तीर नहीं फेंक रहे थे, सब श्री कृष्ण जी आके उनको दिखा दिया था भविष्य क्या हो रहा है। तो आपने जीवन के अंदर ये भविष्य दिखाने वाला कोई नहीं है, आपने जीवन के अंदर भविष्य कोई दिखा सकते हैं तो श्री कृष्ण जी नहीं दिखाएंगे, जीनोमैक्स दिखाएंगे। सो जीनोमैक्स को अपना है, और जीनोमैक्स का जो है इस टेस्ट को कीजिए। अगर आप आपके परिवार के साथ जीना चाहते हो और आप आपका परिवार के लिए कुछ करना चाहते हो तो डेफिनेटली करो। मैं दोबारा जितने भी लोग आज सुन रहे हैं, और जितने भी लोग आज हमें जितना पता है कि वीकनेट एक मिशन है जिसके अंदर जो भी लोग इस प्रोडक्ट को लेके नॉलेज लेना चाह रहे हैं और खुद को एक कंसल्टेंट बनाना चाह रहे हैं, इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर आ सकते हो। आके आप खुद को अपने जो नॉलेज है, नॉलेज को ले सकते हो और नॉलेज के लेके मार्केट के अंदर मूव कर सकते हो। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जितने भी पार्टिसिपेंट्स नया आने वाले और जितने भी लोग ऑलरेडी इधर से सर्टिफाइड हो चुके हैं, सभी लोगों को बेस्ट विशेस है। और जो भी लोग SHPL को सपोर्ट कर रहे हो, इस बिजनेस को एक नया रूप देने के लिए, वेलनेस इंडस्ट्री को एक नया चेहरा देने के लिए, मैं तहे दिल से आप लोगों को शुक्रिया करना चाहता हूं। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू एवरीबॉडी। Thank you so much, Gopal sir. I really look forward to meeting you. We haven't met still, but that was wonderful. And yes, we have a few more very interesting guests of honors, and it is my immense pleasure to call another MBBS all the way from Coimbatore. He has been a mainstream doctor. He has been a diabetologist. He started a couple of centers in South India. He started the Tirupur Diabetes Center. He started the diabetes center that was the first diabetes center, and they have treated more than 1 lakh patients. He's conducted more than 1,000 free diabetes camps. He has then started a diabetes medicine pharma manufacturing company that's called as Pharma One India Private Limited, and he is the managing director today. And he also started the Shankar IAS Academy, but today he also has made another startup and chairman of Fastpill Healthcare Private Limited, which is a health fintech company in India.
Well, there are a lot of things, but this mainstream doctor and a diabetologist also has things to say about genetic testing, because बहुत commonly कहा जाता है, जो लोग मुझे भी बोलते हैं, आप डॉक्टर हो, आपको डायबिटीज है। ये सवाल डॉक्टर सेंथिल नाथन फ्रॉम कोयम्बतूर को भी उनके पेशेंट्स ने पूछा है। सो डॉक्टर साहब, जेनेटिक्स के बारे में व्हाट डू यू थिंक एंड व्हाई जेनेटिक्स फॉर अस? Thank you very much, Dr. Usha Nair ji, and thanks for the opportunity. And I congratulate Velocity and Vignet for the wonderful nutrigenomics projects and for the certificate program. See, as everybody is telling, now genetics is going to be the future, because India is the diabetic capital of the world. So everybody knows that. So we are treating lots and lots of diabetic patients. So to the patients, normally we talk about diets and nutrition. So nutrition, so it is not a new thing, but when it is applied to the genetics, like the managing director told, it is epigenetics. When it is applied to the genetics, it is a new thing, because previously this genetics research, genome and DNA sequencing, everything was spoken by the researchers in well-developed countries or advanced countries. Now, the Velocity, they make it very simple, and they are now taking it to the common people. When Dr. Usha Nair was talking to me about this, and I could understand certain things, and I want to apply to myself first. So I have given the test. So I am waiting for the result. So probably I will get benefited myself. So next, as he told, my family members, my friends, my patients, everybody, I can do this thing. But really, it is a very appreciable effort, because diet has got a major role for any disease, not only for diabetics, even a cardiovascular disease. It is India is standing, it's a in big numbers. We are losing a lot of people for a cardiovascular disease, and also the cancer is increasing day by day. So food is playing a vital role. As the managing director and the chairman was telling, see, we have got a sign by name Tirumular in Tamil. Our Prime Minister Modi ji was telling about Tiruvallur in a lot of the meetings. So everybody now come to know about Tiruvallur. But the people in the other parts of the India, we don't know about this Tirumular. What he was telling some 5,000 years ago, it is diet is a medicine. Medicine is a diet. So that's a simple thing. What we call is, it's in Tamil, we call it as a unave marundu, marunde unavu. So like that, our ancient people, they are more wise than us. They know all these things. But unfortunately, their knowledge is not spread to the common people, and it has kept us in the olden literature, and we lost that literature because of so many things, so many situations there. But the diet plays a vital role. Genetics plays a vital role. Even in, you can see in our ancient temples, there are how the children is, babies are formed in the womb of the mother in each and every month. So likewise, our ancestors, they had a very, very good knowledge about even a genetics, nutrition, and all these things. But that is not applied. We are following the Western culture. So our junk food, a lot of other things are going on. We are spoiling our health. So we are triggering our genes for the disease to manifest. So that is the problem. So this genetic sequencing and this DNA sequencing and all these things, they are for the very big people. And it costs lakhs and lakhs of rupees. But now they made it very simple, and they are giving it for in thousands of rupees. Really, it is astonishing to see. So such a well-researched product is available for the common people, and we can predict our diseases. So predictive analysis, it gives us so a lot of changes what we can make in our food, and that food, that reversal of diabetes is now possible. So that is the hottest topic now. So diabetic control, so far we have been telling the people diabetes cannot be cured. It has to be only controlled.
Now we have started telling the people the reversal of diabetes. So if that is possible, so 100 million diabetes going to be there in India in 2030. So since we are the diabetes capital, so that much of people, so we have to treat, we have to give them medicine. The cost of treatment is very high, even for a common people. So like a latest data, the people say the majority of the reason for the debt is for the medical treatment. That is whether you take it the recent COVID or a chronic diseases like diabetes or hypertension. So the cost of treatment is very high. But if you can analyze your genes and predict your disease and change your food pattern, definitely it is going to alter the health status of the Indian people, and also it is going to change the economics of the India, because our government is also spending a lot of money on the health of our people. So healthcare is the major expenditure for any country and also for the individual people. So if we prevent, if we alter some our diet pattern, and thereby if we can Sir, I think and there is a little bit of static on your connection, but thank you so much. That was definitely very, very informative. Yes, हम अभी डिसीजेस रिवर्स कर सकते हैं और ये सारी जानकारी हमारे जीन्स में छुपी हुई है. सो गो अहेड, अगर आप ये साइंस सीखना चाहते हैं, प्लीज रजिस्टर फॉर द कोर्स, बिकॉज हम किसी एक छोटी सी चीज के बीच में आ रहे हैं. दैट इज सेलिब्रेशन ऑफ द पीपल हु कंप्लीटेड द कोर्स. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वी आर हियर टू सेलिब्रेट टुडे एंड tell them all the very best for a very beautiful future. So SHPL और Vignet यही believe करता है that the key to good health is self knowledge, and we are convinced of the extraordinary benefits of genomic wellness. So I now pass on the forum to none other than Stan Sirao sir to congratulate, announce results and give them badhai and take it further. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, Dr. Usha. I think we need to rush in क्योंकि काफी टाइम हो चुका है और काफी सारे लोगों को और बात करना है. तो सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा चेहरा अभी पेश करना चाहता हूँ. SHPL के लोग इनको बखूबी जानते हैं, लेकिन इन वेलोसिटी जेनेटिक्स वो एक न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, जेनेटिक काउंसलर हैं, काफी सीनियर हैं इस कोर्स में, वो भी एक फैकल्टी थी. सो आई लाइक टू इंट्रोड्यूस रिद्धि शाह. उनकी जरूरत नहीं है कि इंट्रोडक्शन करने के लिए. रिद्धि, योर टेक ऑन दिस बैच. इस बैच के स्टूडेंट कैसे थे और आपका अनुभव? थैंक यू सर एंड अ वेरी गुड इवनिंग सभी को. बहुत बहुत हार्दिक कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द पीपल गेटिंग their diplomas today, right? So sir, मैं if you ask me about my experience about this batch, it has been a great teaching experience for me. जैसे हम कहते हैं ना कि मेरे लिए बहुत learning experience रहा है, पर मेरे लिए as a faculty it has been a great teaching experience. बहुत अच्छा लगा मुझे इस batch को specifically सिखाने के लिए because of a simple reason कि ये batch के लोग इतने interactive थे and एक गुरु को और या एक टीचर को इससे ज्यादा और कुछ नहीं चाहिए कि सामने से जब स्टूडेंट्स का रिस्पांस आता है तब उसकी जो पढ़ाने की जो तरीका होता है वो बहुत ही लाइक उसमें चार चांद लग जाते हैं. या सो दैट सैटिस्फैक्शन व्हाट यू गेट फ्रॉम टीचिंग कम्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड आई एम अ फर्म बिलीवर ऑफ दैट एंड दिस बैच हैज प्रूव्ड दैट, राइट? सो अ वेरी हार्टी कांग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर गेटिंग that are getting passed with flying colors today. So we'll have the results in a short while, but I would just like to sign off by saying कि अब इस चीज को आगे चालू रखिए. Do not stop here. This is where your journey begins, guys. जितने लोगों ने ये कोर्स किया है, and as we all heard the eminent speakers talking about the beauty of the science called nutrigenomics and epigenetics, मैं चाहूंगी कि आप आज से आपकी जर्नी शुरू करें in applying those principles of nutrigenomics and see what difference it makes to your life. Yeah, so over to you, sir. Thank you so much for having me on this batch. Yeah, thank you. Riddhi, that was wonderful. You keep speaking to SHPL people all the time. You speak to also velocity people, so thank you very much. We have another eminent personality, जिन्होंने इस कोर्स को क्यूरेट करने में, उसको एडिट करने में, क्योंकि हम लोग इसके ऊपर 2018 से काम कर रहे थे, but then she's been able to
do this meticulously for the last 2-3 years, or she is the coordinator. I'd like to invite now to speak and share her experience, the CCNG course coordinator and the faculty, Reena Balia. Thank you so much, Sansa. A wonderful evening today with so many people. I think there is either 146, there were more than 200 people today, and it has been amazing. All of the eminent speakers, has been wonderful to listen. I usually बहुत ज़्यादा बात करती हूँ classes में, but today I'm going to keep it short by saying congratulations. And you know, एक vertical हमारा ये है जहाँ पे we tend to help people understand their genetic report, you know, to make their lives better, healthier. But the other vertical जहाँ पे हम सिखाते हैं, we actually go into the technicality of the subject, जहाँ पे you will understand how to help others around you. So basically it is passing on the knowledge from you to others. And today I just would like to say it has been an honor and a privilege to be a part of this batch. And with every batch that we have, we realize that, you know, whatever we started, this is good, and you know, we want to continue this. So it will be great to have many more people a part of our next batches. So don't think more, you know, just go ahead with the registration. Agar aapko doubts hai, to definitely you all can get in touch with us. And again, congratulations and good luck to every one of this batch who are passing out today, and congratulations for your certificate. Thank you, Reena. I think both you and Riddhi, आप दोनों ने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया है. एक आध क्लास एक्चुअली 2 घंटे का रहता है. आई हैव सीन एक क्लास तो 3 घंटा रहा और स्टूडेंट्स जाने के लिए रेडी नहीं थे, बोलते नहीं और चलाओ क्योंकि बहुत मजा आ रहा है, इतना मतलब पूरा पैसा वसूल करना है. सो थैंक यू सो मच फॉर योर कंटिन्यूअस एनर्जी एंड विच यू हैव डन. तो SHPL के जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जिनोमैक्स जो प्रोडक्ट है, इसके बारे में हम लोगों ने अभी शुरुआत ही किया हुआ है. थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने के लिए, लेकिन जब समझ में आपको आएगा, इसमें प्राइस और वैल्यू का 2 अंतर आपको जब आएगा, यू विल अंडरस्टैंड दैट दिस इज अ वेरी वेरी गुड प्रोडक्ट. सो अभी हम लोग जाते हैं एंड देन एक वीडियो जो जिनोमैक्स का प्रोडक्ट है उसके बारे में लॉन्च करना चाहते हैं. सो आर यू ऑल रेडी? जितने भी लोग हैं यहाँ पर SHPL को बिलोंग करते हैं या नहीं भी है, तो मुझे चैट बॉक्स में बताइए कि आर यू ऑल रेडी टू लिसन एंड वॉच दिस वीडियो जो SHPL जिनोमैक्स के ऊपर है. एक पॉपुलर पर्सनालिटी जो है, जो सोशल मीडिया में काफी फेमस है, उनका चेहरा है इस वीडियो में. सो हियर वी गो. सो दिस इज द वीडियो ऑफ जिनोमैक्स. सो हियर वी गो. ये वीडियो 10 मिनट का है, पूरा हम लोग प्ले नहीं करेंगे, बट वील हैव वी विल एक्चुअली वॉच इट फॉर सम टाइम. So let's go ahead and then... Hello everyone. आखिर क्यों एक पढ़ा लिखा, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग और अपेरेंटली हेल्दी इंसान जो हेल्दी लाइफस्टाइल लीड करता है, हेल्दी डाइट फॉलो करता है, डेली वर्कआउट भी करता है, जिसे कोई क्रॉनिक डिजीज के सिम्टम्स भी नहीं है, उनको अचानक बड़ी बीमारी से डायग्नोस किया जाता है और कई बार वो अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं. अचानक क्यों उनके चले जाने की खबर आती है? क्या बीमारी है, जैसे कि ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स, जॉइंट पेन या कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों से जो जूझ रहे होते हैं. ये 20% लोग जो हैं वो अपनी हेल्थ को लेकर काफी ज्यादा सीरियस होते हैं, एक हेल्दी लाइफस्टाइल को लीड करने की पूरे तरीके से कोशिश भी कर रहे होते हैं. जबकि 80% लोग जो खुद को हेल्दी मानते हैं, ये ना तो कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं और ना ही हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अपनाते हैं. मानो ये बीमार होने का इंतजार कर रहे हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आएगी तब एक्शंस लेंगे. इनकी मानसिकता है जो होगा देखा जाएगा. ओके, सो ये जो वीडियो है ये YouTube में आपको अवेलेबल है. हम लोग अगर इसको प्ले करेंगे, वी हैव 10 मिनट्स वीडियो का ड्यूरेशन है, तो हम लोग शायद नहीं प्ले कर पाएंगे, बट जो वीडियो है आप देख सकते हैं. आपको YouTube का चैनल जो है उसमें आपको ऑलरेडी मिल गया रहेगा. अभी इसको लॉन्च किया है. सो नाउ वी कम टू द एंड ऑफ दिस वेबिनार एंड द क्लाइमैक्स. मतलब एंड हुआ नहीं है, एंड पार्ट में हम लोग आ रहे हैं. एंड देन द इम्पोर्टेंट थिंग आज जो है, आज के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट्स अनाउंस करना है. सो आर यू ऑल रेडी? ऑल द स्टूडेंट्स, आर यू ऑल रेडी कि आपने कैसे परफॉर्म किया है? एंड अगर आपने किया हुआ है तो डेफिनेटली मैं रिजल्ट्स अनाउंस करना चाहता हूं, बट आई हैव टू ऑल्सो आस्क सम ऑफ द स्टूडेंट्स टू शेयर कि आपका अनुभव इस वेबिनार में कैसा रहा. तो 30 सेकंड्स में आप कर सकते हैं. तो यू कैन जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स एज टू हु वुड लाइक टू शेयर. तो मैं उनको अनम्यूट करूंगा
So who would like to share? So we have some very, very eminent personalities. So let's go with Abhijit. So Abhijit, आपके अनुभव क्या रहे इस batch में? You can speak in Hindi or English, whatever you're comfortable with. Yes, thank you, Stan sir. Friends, I'm Abhijit. I'm from Satara, and I've been working in the nutrition and wellness field for quite a long time. And about the nutrigenomic course, I came to know from a friend who had done this from the batch 1, and he was talking highly about the course, and I was really curious to know about this, because nutrigenomics, the genetic part of nutrition, I was totally unaware of. But when I came to this course and attended the 8 classes for the past 2 months, I was really surprised to know the detailed knowledge which the faculty gave. I'd really like to commend Riddhi and Reena. They were fantastic in their delivery. Very, very energetic, very knowledgeable, and very informative. Plus, the course was designed in such a way that hundreds of videos were there. We were taught almost 50 chapters, and almost 100 to 200 videos were there. So I say that this is a great learning for all the people who are interested in the nutrition and wellness part. And this can be a great career for those people who can see a bigger future for them and the society in general. Thank you, Stan sir. Thank you, Abhijit. So thank you so much. And I think you've been very proactive. And एक चीज ये भी है कि डॉक्टर मिस्टर अभिजीत ने ऑलरेडी अपना जेनेटिक टेस्टिंग भी करवाया है. So I'd like to now go to Dr. Kamal. Dr. Kamal is a celebrity, she is a celebrity and she's a celebrity coach. So Dr. Kamal, over to you. Thank you, sir. Thank you for your kind words. And my experience with Vignet and this course in nutrigenomics has been phenomenal. I'll be honest with you, I didn't have much knowledge about all of this, but the way the course has been beautifully crafted, I think, and moreover with support of excellent faculties like Reena ma'am and Riddhi ma'am, the curious ones amongst us, they were more and more motivated to get to know the impact of this knowledge. And I would just like to sum it up by saying that they say that if one person in the family has the right knowledge, then it affects the whole generation. So I'm proud to say that I would like to take the credit now that in my family I have come to know a little bit about this. So I really thank you, Stan sir, and I really thank Commander Prakash sir, who actually introduced me to this course. So looking forward to a long association, sir. Thank you for the fantastic course. Thank you. Yeah. Thank you so much. I'd like to now go to Miss Kalpana Chauhan. She's from Delhi, a very senior healthcare professional from the Delhi government. तो मैम आपके विचार इस कोर्स के बारे में और क्यों करना चाहिए इसको लोगों को कोर्स? Yeah, good evening all. Actually, मैंने इस कोर्स को जो ज्वाइन किया था, एक्चुअली हेल्थ केयर इंडस्ट्री से तो मैं बहुत टाइम से जुड़ी हुई हूँ. मेरे पास मोर देन 26 years ऑफ एक्सपीरियंस है. बट क्या है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड मैं हमेशा इल पेशेंट्स के साथ ही मतलब इंटरेक्शन हुआ है. तो चारों तरफ इलनेस, चारों तरफ सफरिंग, यही सब था. बट ग्रेजुअली अपनी ही हेल्थ के लिए मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया कि डाइट को कैसे मॉडिफाई किया जाए, कैसे लाइफस्टाइल को मॉडिफाई किया जाए. तो सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के लिए मैंने शुरुआत की थी. तो उसी को देखते देखते ड्यूरिंग माय सर्च ऑन द गूगल एंड ऑल, आई केम टू दिस जीनोमिक्स एंड ऑल दीज थिंग्स. तब मैंने ये ज्वाइन किया कि हाँ, जेनेटिक्स के लिए कैसे इसके लिए हम सोच सकते हैं और कैसे हम इसमें वेलोसिटी को. फिर मैंने जब मैं गूगल में सर्च कर रही थी, टॉप पे ही मुझे वेलोसिटी का वो मिला. तो जब मैंने उसको पूरे को डिटेलली गो थ्रू किया, तो आई गेट सो मच ऑफ क्यूरियोसिटी कि यस, आई विल गो एंड लर्न अबाउट ऑल दीज थिंग्स. और जब से मैंने इसको एनरोल किया कोर्स को, तो मैं मतलब आई यूज टू ग्लू टू द कोर्स मटेरियल. मैं एक के बाद एक चैप्टर पढ़ती जाती थी और छोड़ नहीं पाती थी एक्चुअली, बिकॉज बेसिक नॉलेज आई ऑलरेडी हैव बेसिक नॉलेज. तो उसके अंदर और न्यू मुझे क्यूरियोसिटी मिलती थी, न्यू मुझे जानना होता था कि मैं डीप नॉलेज में उसमें जा रही हूँ. और देन आइसिंग ऑन द केक कि जब वो लाइव क्लासेस चल रही थी, तो रीना मैम एंड रिद्धि शाह मैम, उन्होंने तो इस पूरे कोर्स को इतने सिंप्लीफाइड वे में हम लोगों को प्रेजेंट किया कि एक एक पॉइंट, एक एक जो कंसेप्ट था वो डीपली इम्बाइब हो गया है अंदर. ऐसे लगता है कि
इट्स नॉट न्यू टू अस एक्चुअली. ऐसा लग रहा है कि हम पता नहीं कब से जान रहे हैं इन चीजों को. तो इतने इजी वे में, इतने सिंपलिस्टिक वे में हम लोगों को समझाया, ये एक्सपीरियंस मेरे लिए एक्स्ट्रा. एंड डेफिनेटली कि इस चीज को मैं आगे कंटिन्यू करके और भी लोगों की लाइफ में जो मेरे लेवल पे हो वो मैं चेंजेस लाना चाहूंगी, क्योंकि इसकी बहुत रिक्वायरमेंट है और फ्यूचर है. वी हैव टू मूव फ्रॉम इलनेस टूवर्ड्स द वेलनेस. एक्चुअली ये पैराडाइम शिफ्ट बहुत जरूरी है कि हम इलनेस पे खर्च करने से बेटर है कि प्रिवेंशन पे, और उससे ज्यादा प्रिडिक्टिव हमारे पास एक टूल है. So we can use this tool, and accordingly we can modify our lifestyle, and we can help us also, ourselves also, and our family also. So thank you, Stan sir, thank you Riddhi ma'am, and thank you Reena ma'am. ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए एक सेशन रहा है और मैं इसको always I cherish it, always I'll cherish it. Thank you so much. Thank you. Thanks for your kind words. तो आप दिल्ली गवर्नमेंट के हेल्थ केयर स्पेशलिस्ट होने के बावजूद भी जब इलनेस के आसपास जितने चीजें हो रही हैं तो वहां से वेलनेस में शिफ्ट करने की आपकी जो ख्वाहिश है या आपकी जो एक सोच है वो सराहनीय है. एंड आपने बोलने के बाद में आई एम श्योर वी डोंट रियली हैव सो मच ऑफ अ टाइम टू हैव शेयरिंग फ्रॉम ऑल द स्टूडेंट्स, क्योंकि काफी टाइम हो गया. एंड आई थिंक यू समड इट अप रियली रियली वेल. So really thank Abhijit, Dr. Kamal and Kalpana Chaun ma'am for sharing your feedback. So I'm sure you are like a representative. You don't really have much of a time. It's already 9:30. So let's straight away get into the results. So are we all ready, all the students? So here we go. So let's start and then announce the results. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, so here is the percentage. ये जो percentage है, of course, ये percentage के ऊपर मत जाइएगा. This is exactly something that they have done in the course, but काफी कुछ पढ़ाई उन लोगों ने किया है in their personal life. They are quite accomplished. So Mr. KPV Nagaraju from down south, 68.8%. So they are all passing in the first class. So Dr. Kamal Kotwal is 76.4%. Of course, I wish she's much more capable than that. But of course, last minute उनको वो पूरा आंसर करना पड़ा. Chandrakant Taram has scored 76.4%, and Sai Madhuri has done 83.6%. So ये चारों लोग qualify होते हैं and certify होते हैं in the first class. Congratulate them. So let's now see who are the people who have done much better than this. Let's go ahead and look at the students of distinction. Mishti Rathod is a student, she's just in the 12th standard, लेकिन उनको genetics को समझना है. So she has scored 86.8%. Bappi Gayan is from Itanagar, Arunachal Pradesh. He's done fantastically well, 87.2%. And M. Kirtanashri, she's from Chennai, Tamil Nadu, and उन्होंने score किए हैं 87.6%. She's a nutritionist, and वो हमारी तमिल में counseling भी करती है. So she's now again certified. So let's all congratulate these people. Okay, so now from now onwards, what we are going to see is that the top rank achievers, जो 10 top rank achieve किए हैं, because we have seen people from first class category, we have seen distinction. तो अभी हम लोग देखेंगे who is at the rank number 10. Lino Sequeira with 91.2%.
2%. Rank number Delhi scored 92.8%, so ranked number 9. The chat box are congratulating each and every student who have done really well. Our chat box colleagues like this. We have Alka Singh from Delhi, 93.6%, so that's rank number 8. Congratulations. They have studied really hard. So at number 7, we have Shugra Amin. I think there's a small spelling mistake. So Shugra Amin, ma'am, is at rank number 7, 94%. So really congratulations to all the students who have done really well. And I'd like to now announce the rank number 6. So rank number 6, we may have one or more students. So more than one student. So there are 2. So we have Mr. Paragraut from Mumbai and K. Revati. She is from Madurai, Tamil Nadu. So they have done 94.4%. So for the students who are still unka naam nahi aaya, that means you have done better. She's from Mumbai, so she has done 94.8%. That's rank number 5. Let's look at who is number 4. So number 4, there are 2 people. Mr. from Delhi and also Divya Sanglekar. She's from Pune, but right now she's in Delhi. So they have done 95.2%. So they are ranked number 4. तो उन सभी लोगों के लिए बधाइयाँ. You've done a fantastic job. जो chat box में अपने message. Okay, so let's now move to the rank number 3. Continue congratulating. Rank number 3 goes to Abhijit Lakshman. 96% is what you have shared. So thank you very much. Let's look at rank number 5. Has scored 96.4%. So that means now we have left with only 1 rank. So let's see who the top achievers are. And they have done exceptionally well. मैं चाहता हूँ कि आप जितने भी लोग यहाँ पर अभी उपस्थित हैं, काफी लेट हो गया है. It's almost 1 hour 45 minutes. जितने भी लोग हैं, congratulate करिए because they have done a fantastic job. So one final time. Rank number 1. Topic of Ccng goes to, of course, 2 people together, and that is she's on a mission. So let's all congratulate and from Mizoram. Celebrations. Let's celebrate. Certificates are on their way. Certificates उनको मिल जाएंगे. WhatsApp, I think Jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. कोर्स किया है. So उन सभी लोगों के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत धन्यवाद. So your certificates are ready. Your certificates will be available to you. जो आपको आ जाएंगे. So with this we come to the end of this webinar. The convocation ceremony of batch 8 comes to an end. Thank you so much, Dr. Usha, कि आपने बहुत अच्छी तरीके से exciting anchoring किया. Thank you all the honored guest of honor. We have Dr. Air Commodore Dr. H.S. Arora. All the time he helps us and बहुत सारा अच्छा science के बारे में वो जिक्र करते हैं. एक ऐसी बात छेड़ देते हैं कि जिससे आपको सोचने में मजबूर करते हैं. We have Dr. Senthil Nathan. Thank you so much for your acceptance that you would like to serve people with the genetics. So thank you so much. And my own friend, our colleague and a very dynamic young entrepreneur, Dr. Mr. Gopal Kundu, जो SHPL के जितने भी लोग यहाँ पे हैं, you all should be proud क्योंकि एक ऐसा product हमारे पास है वो हमको हमारे competitor से आगे लेके जा सकता है. And of course our own Reena and Riddhi, and of course my partner and friend जिससे मैं genetics सीखा हूँ, a very young entrepreneur and a researcher, Mr. Milind Doshi. So आप सभी लोगों के लिए धन्यवाद. और जितने भी लोग इतना लेट होने के बावजूद भी, I can see more than 100 people staying back.
क्योंकि ऑलमोस्ट 2 घंटे हो गए हैं। तो ये आपने यहाँ पर रुके, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज वीकेंड है, सो प्लीज गो एंड देन सेलिब्रेट। सो जितने भी लोगों ने जो रैंक्स अचीव किए हैं या परसेंटेजेस शेयर किए हैं, इट डज नॉट नेसेसरीली रिफ्लेक्ट कि उनकी नॉलेज है, बट ऑफ कोर्स एट द सेम टाइम ये टेस्ट में उन्होंने किया है। बट जेनेटिक्स को प्रमोट करना, जीनोमिक वेलनेस को भारत के कोने कोने में पहुंचाने के मिशन में वी आर ऑल नाउ एट रैंक नंबर 1, equally competent and committed. So thank you so much. आप कोई भी, whether from HSPL or anybody who would like to register for this course, the next batch starts on 9th batch starts on 16th of July, मतलब next Saturday से start होगा। उसको कैसे registration करना है इसके बारे में हम लोग आपको जानकारी देंगे इस हफ्ते में, Monday से। So don't worry, you can register and you can also now then become not only a wellness consultant, not a genomic wellness consultant, but a certified genomic wellness consultant. And आपको बहुत अच्छी एक A3 size की certificate आपको मिलेगी। वो certificate you can take a print out and put it in a frame and then take pride saying that 2 महीने मैंने ऐसे नहीं बिताए, मैंने मेहनत किया है, and I've really achieved this distinction. So thank you so much. Have a great weekend. Once again, I'd like to thank each and everyone and have a good night. So bye bye, and our genomic wellness mission continues at Velocity Genetics and at SHPL. Thank you, good night, and bye-bye.